So hi guys, we'll start with the next topic, which is joint and constructive liability. These are the some previous year questions of the topic. Illustrate the doctrine of constructive criminality, which we'll study in this particular topic as well. The provisions of section 149, which has certainly changed now, right? तो ये सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ऑलरेडी, बट एक चीज हमें समझना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी और जॉइंट लाइबिलिटी इज कंटेन अंडर सेक्शन 3(5), राइट? सेक्शन 3(5) में क्या है? Act done in furtherance of criminal intention, राइट? राइट, तो इसका ध्यान रखते हुए हमें चीजें करनी है। और 190 ऑफ द बीएनएस, 190 में क्या है? 190 इज मेजरली अबाउट 190 इज मेजरली अबाउट कॉमन ऑब्जेक्ट, राइट? तो उसके बारे में देखना है। एंड where the parties are animated by common purpose to execute common object, each person becomes responsible for each other's acts committed in execution of the common purpose. As the purpose is common, so must be the responsibility. ठीक है? बेसिकली क्रिमिनल लॉ का कॉन्सेप्ट इसमें यही क्रिएट हो रहा है कि फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मेरे साथ 6 लोग और हैं। हमारा एम है कि हम एक घर से सोना चुराएं, ठीक है? मी प्लस 6 विल गो एंड कमिट द क्राइम ऑफ थेफ्ट. द थेफ्ट विल बी ऑफ गोल्ड, राइट? So if by any possibility I am caught, right, and they have known my chats with the other people of my group, so everyone was having the common object and the common purpose eventually. So all of them will be liable because we had the same common object and common purpose, right? So that is the explanation of this. What is joint liability? Right? It is under section 3 subclause 5 और सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी एज वेल. और अब तो आईपीसी लागू नहीं है, हम सबने देखा ही है. When a criminal act is done by several persons in furtherance of common intention of all, each of such persons is liable for that act in the same manner as if as if it were done by him alone. इस बात का ध्यान रखना है. प्रिंसिपल क्या है? इफ द इंटेंशन इज कॉमन, सो मस्ट बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमने पढ़ा है. एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं. कॉमन इंटेंशन प्लस पार्टिसिपेशन होना चाहिए. Existence of common intention in respect to prior concert between two or more persons, that the person sought to be made liable had in some way participated in the act. For example, जो मेरे साथ 6 लोग भी जाने वाले थे ना, अगर उनमें से एक बंदा सिर्फ गेट पे ही खड़ा है, तब भी ही विल बी जॉइंटली लायबल. तो लाइबिलिटी तब भी क्रिएट होगी, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? कॉमन इंटेंशन इज नॉट एज सेम इंटेंशन, इस बात का ध्यान रखना है. कॉमन इंटेंशन necessarily implies premeditation or prior meeting of minds. However, in possessing the same intention, the parties may set out to achieve the same end, but the requisite pre-concert is missing. ठीक है? इजी. इसका मतलब ये क्या हुआ कि प्री मेडिटेशन होनी चाहिए, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स होनी चाहिए. जब सेम इंटेंशन है भी, द पार्टीज में सेट आउट टू अचीव द सेम एंड, बट रिक्विजिट प्री कंसर्ट इज मिसिंग. ये थोड़ी सी क्या कहते हैं, इलेबोरेशन में सेम कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोस्पेक्ट को यहाँ पे बताया गया है, उसके अलावा कुछ नहीं है. देन कैन बी फॉर्म्ड एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, ईओ इंस्टेंटी, ठीक है? जो एकदम से हो जाए कोई चीज फास्ट, ठीक है? कैन बी फॉर्म्ड जस्ट प्रायर और इन द प्रोसेस ऑफ कमीशन, प्रोवाइडेड दैट इट वाज फॉर्म्ड सम टाइम प्रायर टू द कमीशन, सम टाइम प्रायर टू द कमीशन, ठीक है? और वो पहले भी हो सकता है, लेकिन स्पर में भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना है. Then, act in furtherance of the criminal intention. Criminal act must have been committed for a while or for purpose of executing the criminal intention. The criminal intention
कैन बी ड्यू टू एन एक्ट, कैन भी आई थिंक गलत ग्रामर लिखी है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी गाइस, एंड अनदर एक्ट मे बी डन इन फर्दरेंस देयर ऑफ, एंड अनदर एक्ट मे बी डन इन फर्दरेंस देयर ऑफ। एविडेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन क्या आएगा? एविडेंस क्या है? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, लॉ नहीं है, फैक्ट है, इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, mere presence at the scene of crime may in certain cases amount to participation। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं था, लेकिन कोई सातवां बंदा भी वहां खड़ा है, ठीक है, जो मुझे जानता है, क्या पता वो भी फंस जाए, फंस सकता है, क्या पता कोर्ट ये प्रूव कर दे या हम उसे लायबल ठहराने की कोशिश करें कि वो वहां पे है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है जब क्योंकि कॉमन क्रिमिनल इंटेंशन में क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस फैक्ट के थ्रू बनते हैं। itself is animated by a desire to realize common intention। बरिंदर घोष वर्सेस एम्परर के केस में भी ये बोला है, ठीक है। कॉमन इंटेंशन पढ़ा, हम पार्टिसिपेशन का प्रोस्पेक्ट भी पढ़ते हैं। टू पार्टिसिपेट मीन्स टू टेक पार्ट इन एनी एक्ट which may be taken in furtherance of common cause। The thrust of section 34 or section 35 is on the word done, which emphasizes on the actual doing of the crime and not mere preparation or planning, right? This is it। ये सारे केस लॉज हैं। उसके बाद अनलॉफुल असेंबली का भी मैंने यहाँ पे प्रोस्पेक्ट लिखा हुआ है। पहले हम केसेस देखते हैं, उससे पहले मैं आपको अपने नोट से भी पढ़ा देता हूँ कि हमने कुछ मिस ना किया हो, राइट। मैंने आपको बता दिया सेक्शन 35 में क्या क्या है। जॉइंट लाइबिलिटी है इन डूइंग अ क्रिमिनल एक्ट। द एसेंस ऑफ लाइबिलिटी इज फाउंड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, राइट, दैट इज द सीन। मेजर तीन केसेस जो हैं वो है बरिंदर घोष, महबूब शाह केस एंड पांडुरंग केस, पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद, राइट। बीके घोष में क्या हुआ था, अब मैं आपको ये बताता हूँ। A few men went to commit a robbery in a post office and killed the postmaster in the process। The accused pleaded that he was standing guard outside and had no intention to kill the postmaster, no intention to kill the postmaster। What was held? Section 34 deals with several persons doing separate acts. If an act is in furtherance of the criminal intention, each person is liable for the result of such act as if he had done the act himself, right? Apart from that, the Privy Council की judgment थी। Privy Council observed that even if the appellant did nothing as he stood outside the door, the fact that his act was done in furtherance of common intention, जैसे मैंने बोला था ना कि एक बंदा बाहर ही खड़ा है, तो उसका ये केस लॉ है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस हम पढ़ते हैं इसके बाद, राइट। महबूब शाह वर्सेस एम्परर। A and B killed C and injured D, right? When C and D tried to attack A's cousin, it was held that both had similar intention of rescuing the cousin, but not common intention. Similar intention and common intention. No evidence was there to show a common intention, a criminal intention to commit C's murder। ठीक है, इसमें पहले हमें देखना है कि कॉमन इंटेंशन कनोट्स प्री अरेंज्ड प्लान एंड टू कन्विक्ट द अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस बाय अप्लाइंग द सेक्शन इट शुड बी प्रूव्ड दैट द क्रिमिनल एक्ट वाज डन इन concert pursuant to pre-arranged plan। Criminal act has to be done in pursuant to a pre-arranged plan। You have to remember this, it's very important to remember, right? So yeah, in the given facts it cannot be inferred that Mehboob Shah was acting in concert with Wali Shah in pursuance of concerted plan, ठीक है।
तो ये बहुत ही घुमा फिरा के केस था, लेकिन इसमें बेसिक जो डिफरेंस क्रिएट हुआ था वाज in respect to similar intention and common intention, which we have to note. Then we should read one more case. I think, yeah, Tukaram and Pandurang. We will read both. Right. So Pandurang, 5 accused killed a person. The fact disclosed that the blows inflicted were different body parts, some only half-hearted. No evidence of prior meeting was there. The assailants ran away in different directions. They belonged to different cases and they were not related to each other. Right. Criminal intention or a common intention with respect to that need not to be elaborate, must show prior concert. Held that The court held that while parties may have had similar intention, the presence of common intentions cannot be proved in this particular case. ठीक है, मैं और बता देता हूँ. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था जो मैंने आपको बताया, बट द सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड डेथ पेनल्टी इन दिस केस. सुप्रीम कोर्ट, सेकंड, सुप्रीम कोर्ट set aside death penalty. ठीक है, in this case, several persons can simultaneously attack a man and each can have the intention, namely the intention to kill, and each can individually inflict a separate fatal blow, and yet none would have the common intention required under section 3.5 because there was no prior meeting. For section 3.5, prior meeting is required. It is very important. In a case like that, each would be individually liable for whatever injury was caused. Individual liability create होगी. Individual liability will be created just a second, will be created if there is no prior meeting, right, which is very important. So this is it. तो कराम का भी केस मैं आपको बता देता हूँ. कॉमन इंटेंशन वर्सेस मेंस रिया का भी एक केस है, श्यामलाल घोष वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. इसमें लिखा नहीं है, नीचे लिखा है, नहीं लिखा, तो मैं आपको पढ़ के वो भी बता देता हूँ. श्यामलाल घोष वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. This is a 2012 judgment, and it is basically in respect to common intention versus mens rea. Common intention is not identical to mens rea. The latter may be coincidental, collateral to the former, but they are distinct and different. Right? Difference is in what? Common intention and mens rea. It's CI. Okay? They are distinct and distinct plus different. यहाँ पे कोर्ट ने ये बताया. एक और है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सहारुनिसा. स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सहारुनिसा का भी केस है जिसमें इस बात को और बढ़ावा दिया जाए. सेशन जज कन्विक्टेड ऑल 5 अंडर सेक्शन 302, जो मर्डर वाला सीन था इसमें, एंड सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट. HC on appeal confirmed the conviction sentence of only 2 and acquitted 3. SC upheld HC's observation and held that the act of not opposing Jerusalem Acts does not speak in favor of the 2 who were accused and nurturing, which further nurtured common intention. तो एक केस है, लेकिन आई डोंट थिंक सो इतना इंपॉर्टेंट रहेगा. यहाँ पे ज्यादा रिसेंट जजमेंट ये वाली है,
तो आप अगर आपको याद रहे तो ये जरूर लिखिएगा इसके केस में, 2012 का केस है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड देन वी हैव द नेक्स्ट एक्ट डन विद क्रिमिनल नॉलेज एंड इंटेंशन, सीआई की जो हम बात कर रहे थे, सेक्शन वो 3(6) में है। अंडर सेक्शन 3(5) क्या था, इंटेंशन और नॉलेज इज प्रिज्यूम्ड फ्रॉम वेरी नेचर ऑफ द एक्ट, राइट। सो अंडर सेक्शन 3(5) जो हमने अभी पढ़ा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अच्छा, सेक्शन 3(5) जो हमने पढ़ा उसमें प्रिज्यूम क्या किया गया है, प्रिज्यूम है, इट इज प्रिज्यूम फ्रॉम वेरी नेचर ऑफ द एक्ट कि इंटेंशन और नॉलेज है, इंटेंशन प्लस नॉलेज है, right? But under section 3(6) it has to be concerned with those cases where criminal knowledge and intention must be proved. Then we come to section 3(6). इसमें criminal intention plus knowledge must be proved, must be proved, right? So that is the scene, we have to remember that as well. Section 3(9) क्या कहता है, is a converse to section 3(5), right? It, as section 3(5) deals with common intention which we just discussed, section, अब देखिए हमने 3(9) कर लिया, अब हम 3(5) कर लिया है, 3(6) भी कर लिया है, अब हम सेक्शन 3(9) देखते हैं, राइट। सेक्शन 3(9) deals with act done with different intentions, act done with different intentions, different intentions, right, very important to understand. And therefore by the very nature of the act in section 3(9), rather than joint liability, each person will be guilty of the commission of a criminal act which invites different offenses. Invitation has to different offenses, right. 3(7) is in respect to the effect caused partly by act and partly by omission. ये आप, मैं चाहता हूं कि आप लोग साथ में बीएनएस, मेरे को लग रहा है कि आपने खोल रखी होगी, तभी मैं आपको ऐसे रीड करके बता पा रहा हूँ, नहीं तो अगर आपने बीएनएस नहीं खोल रखी होगी साथ साथ तो आप नहीं समझ पाएंगे ये चीज, राइट। सेक्शन 3(8) is in respect to cooperation by doing one of the several acts constituting the offense, and 3(8) also enunciates the common law principle that when an offense is committed by several acts whichever person intentionally cooperates in the commission of the act commits that offense. In case of criminal conspiracy, the measure of criminal liability of each conspirator is the cumulative effect of the act and not according to the share of each conspirator. Section 3(8) में we have to remember one thing, we have to note the cumulative effect, cumulative effect of the act, of the of the act, right. So that is the scene, right. अब इसके बाद हमें अगली चीज जो शुरू करनी है वो है अनलॉफुल असेंबली, जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टिल हियर. होप यू लाइक द वीडियो. सी यू लेटर. बाय.